Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's class 11th economics. I am Abdurrahim from Boys Higher Secondary School, Tarpura. Today I am going to deliver my lecture on the same topic. Measures to correct disequilibrium in the balance of payment. Now we have already discussed 7 points. Today I am going to discuss 8th point, that is import substitution. Import substitution plays a significant role in correcting an adverse balance of payment. Import substitution means total or partial replacement of an imported product of the same functional requirement, mainly from the indigenous material, and know how it its main aim is to reduce the imports. For instance, prior to independence, India used to import cycles, sewing machines, electric fans, etc. But now the same are being produced within the country. Similarly, in place of imported copper wire, indigenously produced aluminum wire is being increasingly used in electric goods industry. In short, unfavorable balance of payment can be corrected by increasing exports and decreasing imports. Government of India has taken several measures concerning export promotion and import substitution. It was the last point of related with measures correct disequilibrium in the balance of payment. Now, the second topic which I am going to start is export promotion. That is second point. Export promotion. एक्सपोर्ट प्रमोशन इसमें क्या क्या आता है ये हमें देखना है। कोई इसमें भी पहला आता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है अपने मुल्क में हम तैयार करते हैं उसमें इंक्रीज़ करना है, ताकि इंक्रीज़ करने के बाद ये डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर से में से कुछ बच जाएगा, जिसको हम सरप्लस प्रोडक्शन कहते हैं। सरप्लस प्रोडक्शन को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसको प्रमोट करना है, इस प्रोडक्शन में या डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है। इस तरह से जो ये एक्सपोर्ट जो है हमारी प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएगा। In order to increase exports, it is necessary that production of agricultural, industrial, and mining products in the country is increased. Jute products, tea and cotton, textiles are the important items of India's exports. Great efforts have been made to increase the production of all the three products during 5-year plans. And number two is that is institutions 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 for export promotion, for export। हमें ऐसे अदारे को प्रमोट करना है, ऐसे अदारे बनाने होनी चाहिए जिससे हमारा एक्सपोर्ट आइटम जो है ये प्रमोट होना चाहिए। Government has set up several institutions for promoting exports. That is export promotion किस किस को प्रमोट करने के लिए। नंबर पहला है एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसल। एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसल। नंबर टू इज दूसरा इसका है ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नंबर तीसरा है इसका सेंट्रल एडवाइजरी
council on trade. फोर्थ पॉइंट है इसका फेडरेशन फोर्थ पॉइंट है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन. Now today it is enough. Hope you understood it. And yes, tomorrow I will come with same topic and from point number 3. Okay.